Good morning, students. Today we are going to start with the new topic, new subject, that is secretarial practice. And the chapter name is Introduction to Corporate Finance, in which we are going to study this content. And this is what content of chapter: meaning of corporate finance, importance of corporate finance, capital requirements of fixed capital and working capital. These are 3 points which we are going to study in this year. लास्ट ईयर आपको याद होगा कि आपने क्या क्या पढ़ा है सेक्रेटरी प्रैक्टिस में. सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आपने सेक्रेटरी के फंक्शंस पढ़े थे, सेक्रेटरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा था, सेक्रेटरी के क्वालिटीज़ पढ़े थे. सेक्रेटरी के अलॉन्ग विद दैट वी हैड आल्सो स्टडीड अबाउट द कंपनीज एक्ट 2013. ये आपको पता है कि 1956 का एक्ट अभी नहीं रहा है, उसकी जगह अमेंडमेंट होके 2013 का एक्ट अभी इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें अमेंडमेंट जो भी होते हैं वो अमेंडमेंट एक्ट में आपको पता चल जाता है. और वॉट एवर द अमेंडमेंट्स आर गिवन and that are implemented later on. So like this the changes are happening, and according to this year also we are getting the changes in the syllabus of secretarial practice. The chapter which we are going to study in this, the corporate finance, means the financial activities of the secretary and what he needs to do for that, what promoter's role is there, that things are given. प्रमोटर के बारे में भी आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मीटिंग्स के बारे में भी लास्ट ईयर पढ़ा था. नाउ दैट थिंग्स आर समवॉट रिपीटेड इन दिस सब्जेक्ट थ्रू आउट द ईयर, but this is what base which is given in this particular chapter, which is very short. The red lines I have given that suggest you that these two subtopics are eliminated from your syllabus. These two subtopics are for study, self-study, but not included for the purpose of 12th board exam. Okay, let it be, but we are going to study these both points also, because they are the playing key role in knowing what the secretary has to do, how he has to do the capital structure. He has to decide how much the fixed capital and working capital he needs to maintain in the business. So that things we are going to study. For that purpose these two subtopics I am going to tell you in detail also. Firstly start with the corporate finance. Finance, आपको क्या पता है कि finance is the term related to money and money management. Simply it is a given meaning in this, that finance is nothing but a lifeblood of any business organization. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो जिसको फाइनेंस के अलावा कुछ एनी अल्टरनेटिव नहीं रहता है, कि उसको कुछ फिक्स्ड एसेट्स क्रिएट करनी है, कुछ न्यू बिजनेस और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, एट द सेम टाइम ही नीड्स टू गेट मोर एंड मोर कैपिटल contribution through various sources. So these sources, how they have created, how the amount of funds are inflowed into the firm, and how the outflow of that funds is made, that all type of activities are included in finance terminology. Finance means nothing but the financial planning, financial management in the point of view of finance manager. Yes, finance manager is the key person who is playing main important role in making the management of finance. Finance means nothing but it is an inflow, managing inflow of money and outflow of money, outflow of funds. So it is a simple terminology that we had understood through this first slide. Again, what given in the next slide, see that Henry Ford rightly said, money is an arm or leg, use it or lose it. ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि आप अगर जैसे मैनकाइंड है, कोई ह्यूमन बीइंग है, क्या करता है वो अपने जो भी बॉडी पार्ट्स है उसका यूज करता है, लाइक आर्म्स एंड लेग्स that have to be utilized
otherwise it will be not working. जैसे छोटा बच्चा होता है वो सीखता है अपने पेरेंट्स से कि कैसे चलना है, कैसे हाथ का उपयोग करना है, कैसे पैरों का इस्तेमाल करना है, so that he is going to utilize it, कैसे बात करनी है, that all organs of the body in the body of that particular persons are working through the practice and through the regular use. Similar wise, money is the similar terminology, and the finance is a similar terminology which must be utilized by the firm every now and then. They have to get inflow of money and outflow of money similar time. If it is stopped, inflow and outflow of the funds is stopped, then the business cannot be run properly. The competitors are huge outside, so they have to they will beat you, and the firm will not able to work properly. So that is what the broad line of this topic, that money is an arm or leg. It is like an arm which is working to pick up something. Like that, the financial organization or that any company form of organization, manufacturing organization needs to utilize their resources. And these resources can be purchased, can be made, can be developed, can be expanded with the help of money only. So money is an arm or leg which is utilized for the purpose of making production and providing services. Broad meaning of this corporate finance and the definition of it given in this slide. The definition of corporate finance deals with a raising of finance and use of it by the corporation. It is very important definition that two words are highlighted here. Raising of finance, मतलब finance raise करना through the market, capital market, that we have to get the finance. And also use it in a proper manner, effective manner. The word very important, that effectively utilization of that finance is very necessary. Effectively मतलब क्या, जो आपका finance आपको मिला है, जो money आपको मिला है, जो capital contribution आपको मिला है through the different resources, that utilized in a proper manner, optimally they have to utilize. Optimally मतलब क्या, पूरी तरह से उसका इस्तेमाल होना चाहिए, उसका लॉस में उसका रिटर्न जो होगा वो प्रॉपरली उससे एम्प्लॉय करके मिलना चाहिए. मतलब जो जहाँ पे भी जिस भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका फुल यूटिलाइजेशन आपको करते आना चाहिए. जो भी रिसोर्सेज आप कलेक्ट कर रहे हो उसका फुल यूटिलाइजेशन आपको होना ज़रूरी है. दैट इज अ परफेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मनी for the purpose of getting more and more returns. So that this definition is very important, that corporate finance deals with, किससे डील करता है ये कॉर्पोरेट फाइनेंस, दैट विद द रेजिंग ऑफ फाइनेंस. रेजिंग ऑफ फाइनेंस मतलब किस रिसोर्सेज से आप पैसा उठा रहे हो, किस रिसोर्स से आप मार्केट से आप पैसे मिल रहे हैं, कौन से रिसोर्सेज होने चाहिए. That I am going to discuss later on. That's why I am not taking the name of that resources. So these resources, raising of finance, simply meaning remember these words: raising of finance through the market and using of it for the corporation. So this is what definition you have to learn it and remember it for a lifetime, because you are commerce students. It deals with the फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. व्हाट इट डील्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, दैट इट डील्स विद द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. थ्री इसके फैक्टर्स, थ्री आपको एलिमेंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस किससे डील करता है, कि फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज. What activities? Production activities, service rendering activities, like that. Then capital structuring is there. Capital structuring means deciding the resources, whether the owned capital or borrowed capital it is, and making investment decisions. That means how the resources are employed, where to be employed, in which project we should invest that money. That is decided in the making investment decisions.
So these three things are main elements of the corporate finance. It deals with that. It also includes what? Financial planning, study of capital market. फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे होता है, मतलब जो फाइनेंस का जो है वो प्रॉपरली प्लानली यूज किया जाता है. विदाउट प्लानिंग the financial the amount of that finance cannot be utilized. Study of capital market मतलब शेयर्स के डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का यूज कैसे किया जाए, हाउ टू रेज इट फ्रॉम द मार्केट, दैट स्टडी इज मेड बाय द financial manager. Then money market is there, share market is there, capital formation, how to forming the process of forming the capital, in which resources we can form it, by which procedure we can take that raise that capital formation, and foreign capital, also investment through the foreign countries we can get it. So these three things are very important in the point of view of corporate finance. Next main important thing is that, which is not given in your book, but very important for the purpose of knowing the corporate finance. The finance manager's role in managing the funds is very important. That his role in managing funds is very important. Throughout these two slides we understood that managing the funds is very important, and who is going to manage that fund? That is finance manager. He is playing key role in all financial activities. मतलब financial activities कौन सी होंगी कि investment decision है, policy making decision है about certain project, purchases sales का decision है, that financial activities, creditors के बारे में, debtors के बारे में सोचना है, ये सारा finance manager का रोल होता है. मतलब किस क्रेडिटर को पेमेंट इमीडिएटली करना चाहिए, किस क्रेडिटर को लेटर ऑन पे करना चाहिए, कौन से इंटरेस्ट का पेमेंट करना चाहिए, या फिर कौन से डिविडेंड को पे करना चाहिए. दैट डिसीजंस आर फुल फ्लेज्डली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस सिलेबस. ही हैज़ टू इंश्योर फॉलोइंग थिंग्स. उसे फाइनेंस मैनेजर को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है. कौन सी सारी चीज़ें? फर्स्ट इज द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस. फर्म के पास एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस है या नहीं है. एम्पल अमाउंट ऑफ फाइनेंस मतलब क्या? जो उसका यूज कर सके इतना फाइनेंस फॉर प्रोडक्शन पर्पज, वॉट एवर द अमाउंट इज necessary, that is adequately available or not, that he has to see. They have to choose right resources of funds which have minimum cost. मतलब जो भी रिसोर्सेस ऑफ फंड्स आप चूज़ करने वाले हो, सोर्सेस ऑफ फंड जो भी चूज़ करने वाले हो, उनकी कॉस्ट कैसी होनी चाहिए? दे मस्ट बी ऑफ मिनिमम कॉस्ट. मतलब ये कॉस्ट फंड्स की कैसे कॉस्ट हो सकती है, ये आप सोचो ज़रा. कि अगर आप बैंक से पैसा उठाते हो या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसे उठाते हो, एट दैट टाइम यू हैव टू पे इन सर्टन रिटर्न टू दैट. मतलब आपको कुछ रिटर्न उसको देना है. जैसे बैंक को क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो ये इंटरेस्ट क्या हुई? इस कैपिटल की, बैंक लोन की, इस सोर्सेस ऑफ फंड्स, यहाँ पे कौन सा हुआ? बैंक लोन. और उसकी कॉस्ट क्या हुई? इंटरेस्ट अमाउंट. सो we have to choose that loan facility which is of minimum cost. उसके लिए आपको करेक्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना पड़ेगा. उनके टर्म्स एंड कंडीशंस हमें ठीक से देखने पड़ेंगे. सो that should be of minimum cost, so that the benefit, the profitability will be more. The firm utilizes funds effectively or not. He has to also see that whether the firm is utilizing the funds effectively or not. मतलब जो भी फंड्स उन्होंने फर्म के लिए कलेक्ट किए हैं उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर मैनर से हो रहा है नहीं हो रहा है. दैट ही हैज़ टू कीनली ऑब्जर्व. देन दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर. मतलब ओनर के लिए मैक्सिमम रिटर्न क्या होता है? तो प्रॉफिट होता है.
तो जनरेट करना, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना फॉर इट्स ओनर्स इज द मेन इंपॉर्टेंस एंड मेन गोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, बिकॉज विदाउट प्रॉफिट द फर्म कैनॉट सर्वाइव. ओके, अगर ओनर को इतना प्रॉफिट नहीं हुआ उस प्रोजेक्ट से तो वो इमीडिएटली क्लोज कर देगा, दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देगा. सो टू अवॉइड दिस एक्टिविटी दे शुड गेट इन द similar project much amount at a less cost which is should give the maximum returns. तो उसमें आपको proper planning with the help of the subordinates he has to do. So next is a important decision taken by the finance manager. यहाँ पे आपको फाइनेंस मैनेजर के डिसीजंस कौन से होते हैं, तो आपको दो तो दिखाई दे रहे, वही दो आपके मेन डिसीजंस हैं. एज द फाइनेंस मैनेजर इज मैनेजिंग ऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंसर्न, ही हैज टू टेक two important decisions given as under. Which decisions? First is a financing decision and second is a investment decision. So what is a financing decision? Financing decision is the firm has financial needs which may be big or small in nature. मतलब big nature की मतलब for a purchase of assets, for purchase of any furniture, for purchase of any building, extension of building, reconstruction for that purpose. To fulfill those needs, the manager has to choose right sources of funds like equity shares, preference shares, debt capital through debentures, bank loans, etc. यहाँ पे दोनों रिसोर्सेज मैंने डिस्कस किया, आप ध्यान से देख लो कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दे आर सम टाइप ऑफ ओन्ड कैपिटल, not preference not a borrowed capital. Then debt capital is debentures and bank loans, bonds, like this is a debt capital. ये दो तो आपको मालूम है, ब्रॉड लाइन इसका आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कुछ फीचर्स भी आपने इसके पढ़ लिए हैं. तो इन रिसोर्सेज को आपको चूज करना है, इनका डिसीजन आपको लेना है थ्रू द डेप्ट कैपिटल. आपको कितना अमाउंट, कितने रेशो में अमाउंट लेना है, और इक्विटी से आपको कितना अमाउंट कलेक्ट करना है. सो थ्रू द इक्विटी एंड थ्रू द डेप्ट कैपिटल, दैट इज अ रेशो. सो इक्विटी टू डेप्ट, दैट रेशो हैव टू बी डिसाइडेड बाय द ओनर ऑफ द कंसर्न. he has to decide whether the combination of the equity and debt is a proper, and he has to afterwards observe that what are the results on the profitability, what are the impacts on the profitability of the concern. So for that he has to make perfect combination of equity and debt capital. Next, second decision is very important also, that investment decision. जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि इस कैपिटल का जो फाइनेंस के थ्रू हमें मिला है, जो डेप्ट कैपिटल के थ्रू मिला है, जो इक्विटी कैपिटल के थ्रू मिला है, उसका इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में, किस प्रोडक्ट लाइन में, किस प्रोडक्शन चेन में आपको यूज़ करना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कितना खर्चा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना खर्चा करना है, आपके वर्क मैन फोर्स जो भी है, मैन पावर जो आपके पास जो भी है, उन पे कितना खर्चा करना है, दैट वी हैड टू डिसाइड. द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर इट, and that after selecting the resources of funds, the proper finance manager has to decide the investments where to be made. He has to find the cost of capital so that he can understand how much return the concern should get out of the investment. मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको जो भी कैपिटल मिला है थ्रू द इक्विटी कैपिटल एंड थ्रू द डेप्ट कैपिटल, उसकी कॉस्ट आपको जान लेनी है कि आपको अगर इक्विटी कैपिटल, आपने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अगर आपने ओन कैपिटल कलेक्ट किया है, इक्विटी कैपिटल कलेक्ट किया है, तो उस पर आपको कितने रेट से डिविडेंड देना पड़ता है, उसका सोचना पड़ेगा. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. डिविडेंड इज कॉस्ट फॉर दैट कैपिटल. अगर आप डेप्ट कैपिटल कलेक्ट करते हो, मतलब बैंक लोन लिया आपने,
कुछ परसेंट से. So that percentage of bank loan, whether it is to be giving more returns for the firm, whether it is useful for the firm, that have to be decided. So that after making that investment, the finance manager not again have to think over that the amount which is invested is just a waste of that money in this particular project. So this should not be happen. For that purpose, the proper planning of investment have to be made by the finance manager. On the next slide, importance of corporate finance is given. So why the corporate finance is necessary? What is the need of this corporate finance? That all things are given in this slide. Helps in decision making. क्या आपको decision लेना है? Time to time decision he has to take. The routine expenses for long term expenses, the decisions have to be made. So when you will make the corporate, you will utilize this concept of financial planning. At that time it will make help in your working smoothly. For the purpose of that, this help in decision making, the corporate finance is important terminology. So every decision in business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability. मतलब इसका profitability पे क्या असर होता है, क्या impact होता है, that he has to see. Next is number 2, helps in raising capital for a project. मतलब जब आप कैपिटल कलेक्ट करते हो वाइल थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, जिसे फर्स्ट टाइम इशू होता है उसे बोलते हैं आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. थ्रू द डेप्ट कैपिटल, अगर डिबेंचर्स बेच के थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स दैट विल बी रेज्ड, दैट इज अ डिबेंचर कैपिटल. बॉन्ड्स and or by taking loan from banks. So it can help through these different channels. If you have made proper selection, so we are getting channelized to get to raise the capital for a new project. So when a new project is started of the concern, न्यू प्रोजेक्ट मतलब क्या, अभी एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस चालू है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टेड है, पर along with that if the company is thinking over the new project, so they have to choose one of the resources through these. So for starting a new project, the capital can be raised through these one of the resources, instruments we can say. So it will be getting the fresh capital. So helps in research and development. When the firm is regularly working on production process, they have to adopt new technology, new technical support they have to take. For that purpose, advanced machinery, advanced technology, on that the company have to work. So there is a R&D department, that is a research and development department. So for to support this department, to support this particular activity, there is need of money, and which can be fulfilled by the ample of financial support which is made by corporate finance. So while deciding that resources on research and development, the company need to take money from the different sources. Helps in smooth running of business. The business can be smoothly run when working capital of that particular organization is ample of amount is available. For routine requirements, fulfilling routine requirements, there is a need of money. That is what routine requirements are there: salary, payments of salary, payment of wages, raw material, purchase of raw material, that then sales promotion. These are regular activities, and for that the working capital is necessary, and which can be fulfilled by the business organization through the corporate finance. So that there is also need of finance. Brings coordination between various activities. जैसे आपको मैंने ये बताया कि सैलरी पे करने के लिए, वेजेस पे करने के लिए,
सो ये जो ह्यूमन पावर है, इनको प्रॉपर टाइम पे पैसा मिलना चाहिए, सो दैट दे विल कम ऑन द वर्क एंड देयर लॉयल्टी विल बी विद द फर्म. सो इट ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन. They will give the 100% result for the organization, and it is very useful for the firm to bring the coordination between the purchase, sales, production process, all these regular activities, because they are interrelated with the each other. अगर आप रॉ मटेरियल परचेस करते हो, प्रोडक्शन में एम्प्लॉय करते हो, फिर बाद में उसके सेलिंग एक्टिविटीज, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज आप अंडरटेक करते हो, सो दैट to not break this chain, to bring the coordination between these three activities, there is a much importance of corporate finance. Next is promotes expansion and diversification. Modern techniques and machineries are required for expansion. जो एक्सपांशन है बिजनेस का करना है कि अगर आप टाइम के साथ चलते हो तो बिजनेस को एक्सपांड करना ज़रूरी है. अगर बिजनेस एक्सपांड नहीं होता है, स्टेबल रहता है, तो वो कभी ना कभी एंड हो जाएगा. दे हैव टू मेक द चेंजेस इन देयर ओन बिजनेस एक्टिविटीज़. जैसे आपको याद होगा कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती है, एडवर्टाइजिंग होती है किसी प्रोडक्ट की, तो वो चेंजेस होती जाती है. उसका कहीं पैकिंग चेंज होता है प्रोडक्ट का, कहीं उसके स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाते हैं, कहीं फीचर्स चेंज हो जाते हैं. सो दैट इज़ व्हाट changes according to the demand of the people. Here also, for expansion purpose, for diversification purpose, the corporate finance is very important, and the funds required for it is provided by the corporate finance. Next is the seventh importance is managing risk. When there is natural calamities, strikes are there, sudden fall in sales, it may happen like this corona pandemic. There might be sudden fall in sales. So to face these risks, the company needs to get some finance, some amount of finance to keep it in reserve. So to manage these risks, to manage these reserves, there is a need of corporate finance, there is a need of financial planning, which is made under the corporate finance. Number 8 is रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड एसेट्स. मतलब ओल्ड एसेट जो है, जो अभी ट्रेडिशनली यूटिलाइज किए फर्म ने, कंसर्न ने, उसका कैपेसिटी जो है टाइम के साथ डेप्रिसिएट हो जाता है. डेप्रिसिएशन जैसे पढ़ा है ना अपने अकाउंट्स में, जो टाइम के साथ जो होता है उसका डेप्रिसिएशन होते जाता है, कैपेसिटी, प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. So it will be replaced, it required to be replaced with the new machineries, new assets. दूसरा ऐसा भी होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी जब हो जाता है तो भी वो डेप्रिसिएशन करके ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से आप प्रोडक्शन करते हो, इट विल बी नॉट एट ऑल डिमांडेड इन द मार्केट. सो हाउ टू बी चेंज्ड, एंड फॉर रिप्लेसिंग दैट अमाउंट, दैट एसेट्स, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट. Huge finance is necessary, and for that purpose the company needs to keep amount to manage this amount for the purpose of purchasing, replacing the old assets. Number 9th is payment of dividend and interest. Now you know that payment of dividend is a reward for shareholders, and interest is a reward for borrowed capitals. So for these two returns to the outsiders, there is a need of finance. Huge amount of finance is necessary, as we are paying dividend throughout the year 2 times, interim dividend and final dividend. Then amount of loans, amount of interest have to be paid on loan amount. Creditors को time to time payment करना पड़ता है. So these amounts have to be paid on time. Otherwise the relation between the firm and outsiders will be get harmed. For that purpose, the company have to adopt this concept of corporate finance. They have to make the financial planning. Then next is a 10th, payment of taxes and fees. On time payment of fees and taxes is necessary to the government. Like we are paying the GST, income tax, and fees to register by the company only. So it is a need to be paid after certain time,
and that are the expenses which may be of a big amount. So to pay off these amount, there is a need of particularly financial planning. These for all 10 important points have to be remembered by you people. So this is what explanation. If I am getting very fast, just rewind the lecture, because its theory part have to be go very fastly. Next is a recapitulation up to this. आज हमने जो पढ़ा है क्या पढ़ा है? एक तो definition meaning of finance and corporate finance. Then we had understood importance of it. Now we are going to recapitulate it, what important thing and summarized part of the whole topic is given here. Number 1, finance is the concept related to the money management. Money management ही होता है in short. Number 2, financial planning is nothing but finding resources or sources of funds and application of that in a effective manner. Effectively उसका अप्लाई करना ज़रूरी है. बस sources कलेक्ट कर लिए, funds कलेक्ट कर लिए, that is not sufficient for the firm. Then my finance manager is the key person who is going to handle this financial planning. Finance manager to handle the financial matters of the company, as well as with the help of CEO of the firm and all the higher authorities, obviously. So you will not get confused. Finance manager ही सब करता है क्या? नहीं. So all other bodies are also helping to him. He has to plan according to the financial requirements of the firm. He has to prepare proper capital structure of capital, that is own capital and borrowed capital, where he needs to consider the cost of capital to get more returns. And last thing is, in recent times of cutthroat competition. Cutthroat competition मतलब क्या? अगर आपने according to the market situation, if you have not changed, there is a cutthroat competition. The firm will be not able to survive in the recent corporate world. The financial planning is essential for each firm which is part of corporate finance. Financial planning उसके लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट है, important part है किसका? Corporate finance का. So this is what for today. In the next session we are going to see the next part of the chapter. Thank you for watching this video.